हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम फ्रेश और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 5, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारे के सारे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग एच 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क का। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस resources, namely men, materials, methods, and money, and establishing relationships among them for the accomplishment of specific objectives. First of, in other words, organization is concerned with creating a structure of relationship for the efficient utilization of various resources of the enterprise. उसके बाद देखिए, according to Henry Fayol, to organize a business, it is to provide it with everything, useful to its functioning, raw materials, machine and tools, capital and personnel. तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस प्रकार के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको वेरी रिजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की 2016-2022 में क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क का। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द होल वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन of the work is avoided and the work can be completed as per predetermined goals. दूसरा देखिए, creation of departments. Various jobs created at the first stage are classified into specific categories like production, purchasing, marketing, financing, personnel, etc. First, based on this classification, all related jobs are put together to create department or divisions. ठीक है, उसके बाद नंबर 3 देखिए, अपॉइंटिंग सुइटेबल पर्सन। वंस द डिपार्टमेंट हैज बीन फॉर्म्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी असाइन्ड द वर्क टू द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। फुल स्टॉप। इन ऑर्डर टू एंश्योर effective performance in an organization, it is essential that a balance is created between the nature of the job and ability of the employee responsible for that job. एंड लास्ट पॉइंट देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ वर्क। ए पर्सन विल बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ओनली व्हेन ही इज गिवन एडिक्वेट अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। फुल स्टॉप। इफ वर्क इज असाइन्ड विदाउट डेलीगेटिंग अथॉरिटी, इट विल बी मीनिंगलेस। फुल स्टॉप। द टॉप मैनेजमेंट शुड डेलीगेट अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फुल स्टॉप। ए पर्सन कैन बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ए वर्क ओनली व्हेन ही इज गिवन रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू। फुल स्टॉप। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो टुगेदर। तो ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इंडिविजुअली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग 2014, 2016 एंड 2023 में आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस वीडियो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा।